हेलो गाइस, लेट्स गो। आज वापस से शुरू करते हैं गेंशिन इम्पैक्ट की हमारी स्ट्रीम। वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। My potted plant on the porch has died again. लेट्स गो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम अगेन। आज हम वापस से शुरू करेंगे हमारी गेंशिन इम्पैक्ट की स्ट्रीम। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा गाइस तुम लोगों को? कुकी मिल गई हमें, हमारे पास नहीं थी। थोड़ा लैग हो रहा है बीच बीच में, हेवी हो गया है गेम भी। क्या लगता है गाइस, आज हम 10 पुल्स कर पाएंगे? वापस से नहीं कर पाएंगे आई गेस, 0 है हमारे पास। सो आई गेस लगता नहीं, पर आज हम ज़्यादा देर तक करने वाले हैं स्ट्रीम, क्योंकि कल है संडे, छुट्टी का दिन है। तो यस, हम आज ज़्यादा देर तक स्ट्रीम करेंगे। Hello. I appreciate you looking after Aino these past few days. Oh, it was nothing. A promise is a promise, right? Anyway, is Yehoda here? She probably has a bunch of new clues for us. Let me explain. After I got back from the Frost Moon Scions, I started doing some digging into that merchant, Asako. The fact that he outright tried to buy Aino's bot definitely makes him suspicious, but even after asking around my boss's circle, I couldn't find any evidence that connects him to this mess. Out of all the merchants we met, he has the cleanest record.
checked all the other merchants too, but the trail came up cold each time. Most of them didn't even know about our trip to the Frost Scions. लैग हो रहा है क्या गाइस? देखना पड़ेगा, रुको एक मिनट. I guess अभी लैग तो नहीं होना चाहिए. Whoever's behind this thing is extremely clever. Covered their tracks perfectly. Tracking down a person like that is gonna take a lot more than 2 days. So, you're saying... Summarizing intel. Condensing main points. Conclusion. Over the past 2 days, Yehoda has found no useful information. Did you have to make it sound so pathetic? Oh, how am I gonna explain this to the kid? So, there's really nothing we can do? I mean, short of rounding up those merchants, interrogating them, and searching their private warehouses for ourselves? Nope. Sounds like a good idea to me. That wasn't a suggestion! These aren't the type of people you mess with on a whim. Oh, I'd turn all of Nod-Krai upside down searching before I went after a man like Asuko. Turning all of Nod-Krai upside down. That is indeed Aino's backup plan. Okay, well, I wasn't serious about that suggestion either. If that is what Aino decides to do in the end, then I will support her. I've been thinking things over a lot since I got back. And the truth is, I can see why Crumclank's technology is being targeted by those chumps. But that means any of my bots could be next, including Inefa. If we don't get Crumclank back, if we don't show them we're not an easy target, then there's nothing stopping them from coming after the rest of my robo friends. So, even if I really do have to turn all of Nod-Krai upside down, I will save Crumclank, no matter what it takes. Oh, I know. You said Asuko was the biggest suspect, right? Let's start with him then. Someone sent a letter. It appears to be for you, traveler. Yeah, for me, Slayer. Really? Let's take a look. Long time no see, Slayer. Not long ago, I happened to hear about the troubles you're facing. Seeing as you've always been top-notch customer of mine, it's only natural that I find some way to help you. Okay, समझ गया. डोरी का है. As such, I prepared an exceptional service plan, guaranteed to relieve your woes. Woes. Just drop by my shop for further negotiations. Of course, considering we are old acquaintances, but now I'll give you a 20% discount. Don't miss out now. अरे भाई यहाँ पे भी. Huh. Paimon would recognize that tone anywhere. It's her, isn't it? Yep, it's Dory. Seems like she has a way to help us. Dory's services are usually a bit more complicated than that. पैसे के बिना कुछ नहीं चलता वहाँ पे. 10 pulls She's जमा got झाले का quite है. a काल झाले होते जमा. reputation around Nod-Krai. परवा आणि काल दोन वेळा 10 पुल्स मारलेत. म्हणजे 20 पुल्स झाले टोटल. म्हणजे आता 54 वर आहे. 54 पीटी आहे. 54 पीटी. बघतोय अजून, बघूया. जमा करतोय अजून. She's got quite a unique reputation around Nod-Krai. Well, let's see, at least talk to her. बघूया, उद्या संडे आहे. उद्या फुल डे एक्सप्लोरेशन You're in charge करें. of the workshop, Inefa. This time, we'll get Crumclank back for sure. Very well. Please continue to look out for Aino in my stead. Oh,
You're coming too, Yehoda? Huh. You care too much about Aino to let this go, huh? More like you're not the only one who's got a stupid robot asking you for favors. Boom, boom, boom. A grand battle. Bring it! Huh. Looks like that old man isn't here this time. Ah, look what the cat dragged in. Traveler, Paimon, I see you got my letter. Dory! So it was you! My assistant told me about your little visit 2 days ago. Rumor has it, some terrible thief broke into the Krumkake craft shop and ran off with one of Miss Aino's most treasured companions. Yes, that's exactly right. You must know how much I value you as a customer, Traveler. So, I thought, if you've set out to help Miss Aino, I should do my part too. I did some digging, and I do believe I've come up with the perfect plan. There are too many merchants targeting that bot to root out the thief by going after them one by one. So, how about approaching this from a different angle? Let me guess. इसके लिए पैसे लगेंगे. Maybe the question we should be asking isn't who stole the bot, but where the thief took it in the first place. Huh. She has a point. And lucky for you, I happen to know just the expert to help us out. She's been working smuggling cases for years. If you need to track down stolen merchandise, she's your gal. Of course, a professional of her caliber demands quite a high retainer. But not to worry, I can offer you a 20% discount. How about this? You give me the funds in advance, discount applied of course, and I'll contact the expert. See if we can... Hey, mummy. Wait a minute, guys.
Okay, guys, sorry for the disturbance. And if she sympathizes with our cause and ups the discount, we'll call the difference a little something for my trouble. Sound good? 20% off would be 800,000 mora. Do we have a deal? 800,000? Oh, can't you go any lower? If only I could. But there has to be room for me to take a cut now, doesn't there? 800,000 mora is worth it if it means we get Crumbclank back. It's fine, I'll cover it. Splendid! I'll contact the expert right away. Well, if you're okay with it, Aino. And the sooner we talk to this expert, the better. Great news! The expert is already in the area! I hope we have a productive conversation. Wait, a Melusine? Traveler? Paimon! I've heard so much about you, but I didn't expect Nod-Krai to be the place we'd meet. I'm Sadil! So, the expert is a Melusine? I've heard about these creatures before. They have special senses, right? They can pick up on things humans would never even notice. Really? That sounds amazing! With her help, we'll get leads on Crumbclank for sure. Oh, I guess the price of the retainer was worth it after all. There's something you should know about Dory. Retainer? What retainer? The Traveler is a hero to the Melusines. It's an honor to help him out. I would never ask for even a single mora in return. Oh, wow! I didn't realize this expert idolized you so much, Traveler. Well, since she won't accept payment, I suppose there's no choice but for the entire 800,000 to go to me. As always, I appreciate your patronage. Although, I guess this turn of events is all thanks to your past heroics. In that case, I'll give you a generous 50% off the next time we do business. And the Swindler Clank. Anyway, what are you doing in Nod-Krai, Sadil? We should, take a break after all that running around. Yeah, let's rest here for a bit.
Take your pick. Nothing here is particularly rare or valuable. Take your pick. Hello, Looks welcome to like the that old stream. man isn't here this time. Bro, I can't read your name, bro. What is it? Ah, look what the cat dragged in. Traveler, Paimon, I see you got my letter. Yes, again, I had to do this again. My Already assistant did told me this. about you. Rumor has it, some terrible thief broke into the Krumkake craft shop and ran off with one of Miss Aino's most treasured companions. Yes! Yes! You must Why isn't I there did any some skip digging. There are button, too many guys? merchants targeting that Guys, bot to skip root button out the चाहिए thief यार. by going after them one by one. So, how about approaching this from a different angle? Maybe the question we should be asking isn't, She has a point. and lucky for you, I happen to know just the expert to help us out. She's been working smuggle, of course, a professional of her caliber, to make, but not to worry. I can offer you a 20% discount. How about this? And if she sympathizes with our 20%, 800,000? if only I could. But there has to be room for me to take 800,000 more is worth it. Splendid! I'll contact the expert right away. Well, if you're okay with it, I know. And the sooner we talk to this expert, the better. Bro, Great news! The expert is already in do the I translate area. your I hope name we have a or do I productive play conversation. this game? What do you want to do? What do you want me to do Melody? this? Do right now. Trevor? So, the expert is a real. With her help, we'll get leads on Krumklank for sure. Oh, I guess. There's something you should know about the retainer. The Traveler is a hero to the Mellas. Oh, wow! I didn't realize this expert few minutes ago. idolized you so much, Traveler. I got Well, disconnected and since it's she playing won't a accept game. payment, The scene. I suppose there's no choice but for the entire 800. In that case, I'll give you a generous 50. And the switch. Well, what we all started it. But enough about that for now. Okay, I haven't got We here. all started to get worried. And I happen to have some time off, so I'm here to check up on her. What the fuck? I don't care less. It's okay. It's okay. You shouldn't need to. Why everybody calling me today on my stream? Already. The fuck. अरे इनएविटेबल शैडो वेलकम वेलकम कैसे चल रहा है बाकी सब हाँ मैं अभी भी पहचानता हूँ तुम्हें याद है मुझे मैंने वादा किया था ट्रू कलर का बस ट्रू कलर बोल रहा हूँ भाई ट्रू कलर कहाँ से आ गया शैडो फाइट 2 का हैक दूंगा तुम्हें और आई थिंक दिया भी था मैं भूल गया अभी मैं खुद भी नहीं खेलता शैडो फाइट 2 वैसे हाँ ब्रो यस ट्रू कलर इज द वर्स्ट रियली बट आई हैव टू कीप इट समटाइम्स वी नीड इट Okay guys, just wait. My friend is calling me right now.
I don't know what. So I have to check it. Just wait. Okay, I'm back, guys. I'm back. Okay. हाँ, इनेबल शैडो याद तो है. बस मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद ब्रो. Well, one of the Melazine agents from the Marashose Phantom followed the trail of a smuggling case straight to Nod-Krai. But she still hasn't made it back to Fontaine. But enough about that for now. This merchant told me you needed help tracking down your missing companion. Could you describe them to me? The more details, the better. Then, would it be possible to take me to the last place you saw them? Sure thing! $11.91 subscribers, guys. Perfect weather Let's for a go. nap in the workshop. आज हम देखते हैं गोल कंप्लीट हो पाता है या नहीं. वैसे आज ये भी देखना है कि 10 फुल्स कर पाऊंगा मैं आज या नहीं. 0 कलेक्टेड है. देखते हैं अभी क्या होगा. Alright, this is the last place we saw Crunklank. I remember that the recon bot disappeared right over there. I've learned a little about those flying machines since I've been here. Their battery life isn't very long. Flying all the way out here is probably their limit. So, someone must have been in the vicinity to pick it up. We should ask around. Maybe someone saw something. Oh, there's a group of people over there. Let's ask them. या वो पीपल तो नहीं है, वो ट्रेजर होल्डर्स हैं. लूटर्स. और कैसा चल रहा है भाई? अरे सब मस्त भाई, सब ठीक. अभी Something. कुछ दिन हो गए मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया है. मतलब ऑलमोस्ट 1 साल तक यूट्यूब बंद था. अभी मैंने वापस से शुरू किया है, लाइव स्ट्रीम शुरू किया है. वीडियोस तो अभी तक नहीं डाले, लाइव स्ट्रीम ही कर रहा हूँ. कुछ दिन हो गए, चल रहा है. अभी ये जो गेम चल रहा है वो तो गेंशिन इम्पैक्ट के बारे में है. शैडो फाइट 2 का तो भाई फुल छोड़ ही दिया. अभी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं खेलता ही नहीं. इंस्टॉल भी नहीं किया है और ध्यान भी नहीं देता उस पर अभी तो. अभी बस हाँ, शैडो फाइट 4 है मेरे पास और अरीना खेल सकते हैं अगर तुम शैडो फाइट 4 खेलते हो तो मल्टीप्लेयर. Looking for trouble, kid? No? Then scram. Ugh, not a good start. Legally speaking, even suspects have the right to remain silent. We can't force them to answer our questions. That's what you're worried about? Well, it's your lucky day. There's no law in Nod-Krai. Clink Clank Legion, attack! ओके, हम डायरेक्ट अटैक पे जा रहे हैं. मोर्टल फाइट खेलो. मोर्टल फाइट ओके भाई, देखूंगा. Fine, 100%. fine. If you want to talk, then let's talk. Ask me anything you want to know. Have you seen a group of people carrying a heavy object pass through here? If so, which direction did they go in? फिलहाल तो गेंशिन खेल रहा हूँ क्योंकि नया अपडेट आया है, तो नए चीज़ें हैं वो सब देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ. स्ट्रीम भी कर रहा हूँ उसके बारे में अभी. और क्या, कुछ दिन बाद पबजी की स्ट्रीम करूँगा. पबजी आई मीन बीजीएमआई की स्ट्रीम करूँगा. उसके बाद मोर्टल फाइट. ओके, मोर्टल फाइट में 100% चेकआउट करूँगा. अगर अच्छा लगा मेरे को तो 100% स्ट्रीम करेंगे. Yehoda Smash. I see that pretty much on the daily. And multiple times at that. If we think about when they started the lookout versus when they managed to get away, it would have been 2 days ago, between 4 and 10 p.m. We're looking for anyone in the vicinity who left with a heavy object in tow.
When you put it that way, I did see a group like that. Real shifty looking. Came in the afternoon, left at night. I'm pretty sure they were heading in that direction. That direction. If they knew that their cargo was being targeted by other merchants, they were probably trying to get out of here without being seen. That limits their options. Not to mention how cumbersome it would have been. I think I know where they were heading. Let's go guys. दे लगता है हमें लीड मिल चुकी है. Nod-Krai. हाँ भाई Nod-Krai तो है अभी. बस भाई इस गंज को जमा करते हैं और रैडिश निकालते हैं. बस हमें सीधे रैडिश ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 54 पीटी है. 54 पीटी चल रहा है और गारंटीड है आपको 11 गेम एक्चुअली नहीं करते जमा करते हैं. भाई वहाँ पे जाना है. ये पास पर पास. अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो बताना गाइस. मैं माइक म्यूट कर दूंगा या फिर देखता हूँ कुछ नॉइस कैंसलेशन का ऐड कर लूँगा. Bring it. भाई मर गया मैं. क्रैकिंग. ओके माइक क्रैक कर रहा है. Bring it. तो देखना पड़ेगा. नॉइस कैंसलेशन का थोड़ा मतलब लगाया है इसलिए वो क्या होता है कि फर्स्ट कुछ मतलब शुरू के कुछ वॉइस वॉइस एज अ नॉइस समझ के कैंसिल कर देता है. तो इसलिए प्रॉपरली वो मेरा वॉइस जाता नहीं है. रुको ऑफ करना पड़ेगा. नॉइस सप्रेशन बंद. नॉइस गेट लगा लेते हैं. Time for a nap. Oh wow. Where did my sunglasses go? नॉइस गेट लगाया. देखो अभी क्रैकिंग आता है क्या? या प्रॉपर आ रहा है मेरा. देखिए घर में नॉइस कैंसलेशन वगैरह लगाऊंगा तो वो प्रॉब्लम ही होता है कि Perfect ऐसा एज है. weather for a nap in the workshop. Bring it. Still like a ghost voice. So, this is Okay, the place? wait. But there's no one here. Filter and scary. Now am I audible clearly? अभी मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? देखो अभी घोस्ट नहीं लग रहा होगा. Within the range of a normal adult, if we factor in the weight of their cargo, they would have had to stop here and rest. Which means there should be quite a few traces around here. देखो अभी वॉइस आ रही है मेरी क्लियर या फिर घोसली आ रही है वापस से. मेरी वॉइस थोड़ी डीप है एक्चुअली इसलिए मे बी लग रहा होगा तुम्हें. Traces? What kind? Oh, there's a whole bunch. Here and over there. Oh, it might be hard for you humans to pick up on. Now okay हाँ If okay I भाई. point them out, could you help me investigate? वो नॉइस कैंसलेशन की वजह से क्या हो रहा था कि थोड़ा वॉइस मतलब चेंज हो जा रहा है कि चेंज हो रहा है. क्या बोल सकते हैं कुछ बदल हो रहा है इसमें वॉइस में.
बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है इसलिए मैंने बस किया था। अबे वो डीप वॉइस नहीं, रियली घोस्ट वॉइस थी। ओके ओके। Investigate the traces nearby. Investigate. Investigate. This is the recon bot from that day. But Crumblank isn't here. Yup, pretty much what I expected. When they made their initial escape, they took the recon bot with them to cover their tracks. But it's exhausting to travel with that kind of cargo. So, once they made it far enough, they dropped the recon bot and ran off with Crumblank. I doubt I bet these footprints are from when they fled this location. Is that enough to tell where they went? Enough to give us some clues at least. I see a special kind of sand in the footprints. It clearly isn't from any of the areas we passed through so far. If I'm right, they probably tracked the sand in from somewhere else. Somewhere they go a lot. Like their hideout. A special kind of sand. Oh, wait! Near the Kuvaki Experimental Design Bureau on Paha Isle, there's a place called Maroon Basin. Oh, there's a huge beach there. Of course, वहीं पे गए होंगे। Then that's where we should head next. Wow! Melusines are awesome! I want one! Melusines are people, not pets, I know. I know. Well, that's the last clue we needed, right? Let's get going! Rocky basis. मेरे लिए भी न्यू वर्ड्स हैं। अरे 1182 मीटर्स यहाँ पे है, बहुत दूर है। यहाँ तक लेके आ गए वो। We were right! There's a camp here! But I don't see Crumblank anywhere. Maybe he's inside. Yes, of With course. बाहर तो this नहीं many दिखेंगे people standing guard, breaking in seems out of the question. ना। अरे भाई मुझे भेजो, मैं तोड़ देता हूँ सबको। हाँ वही लाइट हाउस के पास ही है। बिजनेस लाया है। I'm sorry, everyone, but I think this is as far as I can go. There's not much I can help you with in there. बात तो सही है, तुम्हारे से नाजुक से हाथ से कुछ होने नहीं वाला, पता तो है। Don't be sorry, Sadil. You've been such a big help. I wouldn't even mind sharing some of my secret dessert stash with you. And anyway, you probably shouldn't be here for this part because I'm about to do something bad. And you're too good for that. अरे बाप रे, I know थोड़ा मतलब बड़ी बच्चे की तरह बिहेव करने लगी अभी। Okay. I know. Like I said before, I'm the boss of the Krumkake craft shop, and I'm gonna save my friend no matter what it takes. मतलब सच बोलूँ तो मतलब आइनो का जो कैरेक्टर बिल्ड है, मतलब कैरेक्टर जो बनाया है उसको थोड़ा क्रिंजी बनाया है। मतलब बच्ची तो है छोटी, कुछ ज्यादा ही मतलब क्रिंजी लगता है। तो चलो ठीक है। Whoa! Is that Zip-Zap Spybot number 1? It's Zip-Zap Warbot number 1 now. Whoa! Warbot? One shot. I knew One shot the kid wasn't was it? making dangerous stuff. With Zip-Zap Warbot on our side, there's no stopping us. Come on! Charge! The wrong test subject. ये कौन सा गेम खेल रहे हैं अभी हम? मजेदार है। What is this thing? Help! Does somebody help me? What are you running for? Just take it down! There's nothing scary about. The wrong मैं अभी test तक subject. एक डैमेज में नहीं खाया मैंने।
कहाँ जाना था? गलत आ गया। तो यहीं पे जाना था। Phew! We're in! Wait! What's that? गया भाई, खत्म खत्म। Whatever it मिनीगन is, चल रही है। it doesn't look friendly. Oh, अरे यार मुझे भेजो यार, 2 मिनट में This खत्म hunk कर of देता metal हूँ। has Crumclank's साला मुझे core. नहीं भेज रहा। The thief already took him apart. Quite the improvement, don't you think? My creation is 10 times more powerful than your little toy. Can't say I'm surprised. That's what a true genius can do. Genius. Wait! You're that guy from the black market! The one at the front desk! You're the one behind all this? If your goal is to accomplish something that will shock the world, you're better off working behind the scenes. I must admit, though, I'm rather surprised you made it this far. I expected you to spend more time fixating on those merchants. Human thinking. you deliberately tried to steer us in the wrong direction. What? You never questioned the fact that the first notice you found just so happened to have the clues you were searching for? The front desk is where people go to exchange information. But I get to decide what to put front and center. The person who controls... भाई गलत टाइम पे फोन कर रहे हैं यार, सच में। मतलब मैं स्ट्रीम करूँ या ना करूँ यार। ओके, रुको रुको, करता हूँ मैं। गेम वॉइस को कम करता हूँ, रुको, मतलब कम करके मेरा वॉइस बढ़ाता हूँ। रुको, गलत टाइम पे फ़ोन कर रहे हैं यार, सच में। मतलब आज मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ गाइस, और स्ट्रीम पे ही ऐसा करना है? क्या बोलूँ यार। देखो अभी गेम का वॉइस थोड़ा कम कर दिया है मैंने। देखो अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, और गेम का साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा। एफ की वॉइस को 5 पॉइंट्स रखा करो गेंशिन में। एफ की वॉइस को 5 पॉइंट्स रखा करो गेंशिन में। So you're the one who मतलब stole समझा नहीं वो Crumclank. कैसे करना है। हाँ क्लियर है। Both ओके। times? So what if I am? There's only one rule in Nod-Krai. Winner takes all. With this prototype, the more I earn will put me on equal footing with the other factions. Then, no one, not even you, will be able to say a word against me. अरे भाई तू ऑलरेडी चोरी का माल यूज कर रहा है, और तू मतलब ओनर को बोल रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो इससे भाई और बढ़िया बना सकता है। भाई सच में दिमाग नहीं है क्या लोगों में? Just using a piece of tech you stole from Aino? एग्जैक्टली यहूदा, मैं भी वही बोल रहा हूँ। Stole? No, rescued. My I'm ass taking rescued. advantage of its wasted potential. ओके वेट, देखता हूँ मैं। गेंशिन साउंड्स में मैंने कभी चेक नहीं किया। गेंशिन में ऐसा एफ के साउंड का भी ऑप्शन है, तो को देखना पड़ेगा। ये एक बार कटसीन खत्म होने दो, देखता हूँ। Ever since learning about Kuvaki, I knew there was huge ब्रो But 2 no मिनट one वेट करो, saw my देखता हूँ मैं।
सॉरी गाइस, स्ट्रीम पे तो ऐसा सब होना नहीं चाहिए, पर क्या करें अभी, फैमिली कॉल्स। व्हाट कैन आई से अबाउट इट। मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद यही होता है और कुछ नहीं। ओके वेट, देखता हूँ अभी। अरे यार वापस से मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा यार, सीरियसली। आई हेट दिस। ओके, वो ऑडियो में देखता हूँ। ऑडियो में SFX वॉल्यूम, SFX बोल रहे थे क्या? AF के नहीं, SFX होगा मे बी, तुम बोल रहे होगे। या डायलॉग वॉल्यूम, कौन सी चीज़ बोल रहे थे? हाँ SFX, ओके हाँ SF के नहीं, SFX। ओके, उसको कितना रखना है? 8 पॉइंट। ओके 8 पॉइंट पे रखा है, ठीक है। चलो हाँ, म्यूजिक वॉल्यूम भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, जैसे मेरी वॉइस एटलीस्ट क्लियर जाए। ओके 7 और 6। ओके 7 और 6 रखना है क्या? ठीक है, रुको 7 रख देता हूँ, और वो म्यूजिक वॉल्यूम भी 7 रख देता हूँ। म्यूजिक थोड़ा कम ही सुनाई देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिट गाइस, मुझे वापस से नहीं खेलना सच में। Phew, we're in. ओके नहीं, ओके एटलीस्ट वहां तक तो आ गए। वैसे स्ट्रीम मेरी क्लियर दिख रही है, मतलब क्वालिटी कितना 1080p दिख रहा है क्वालिटी में? दिखना तो चाहिए 1080p 60 दिखना चाहिए। ओके आई गेस दिख रहा है। Whatever it is, it doesn't look. भगाओ यार भगाओ, वापस This नहीं hunk of metal has Crumclank's core. The thief already took him up. Quite the improvement, don't you think? Wait, If your goal, I must admit, You भाई delete 144 the feet front desk. भाई you're मजाक So मत what? कर। There's only one. just using a piece of tech you stole from Stole? No, rescued. I'm taking advantage of its wasted potential. सबके हिसाब से जियो फोन पे स्ट्रीम देख रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग। अरे जियो फोन पे भाई सच में? ना हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। मैं नहीं बिलीव करता भाई, हो ही नहीं सकता। Ever since learning about Kuvaki, I knew there was huge potential for machine integration. But no one saw my vision. I came all this way, but the stubborn natives refused to even entertain my ideas. It didn't go any better with the Fatui and their monopoly on Kuvaki research. भाई जियो फोन पे, भाई जियो फोन मतलब But then, this stupid girl who spends all her time making useless toys opens a workshop, and all the factions of Nod-Krai practically grovel at her feet. पर तो वो होशियार है, वो कुछ भी बनाएगी, तुम्हें क्या करना है? और हाँ भाई जियो फोन मतलब मैं हैरान हूँ कि जियो फोन अभी भी चल रहा है। मतलब वो मतलब भाई सच में ट्रैश है वो। जियो के सारे फोन मतलब ट्रैश, उनका कीबोर्ड प्रॉब्लम, आई मीन कीपैड प्रॉब्लम, डिस्प्ले का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बैटरी का प्रॉब्लम, भाई बहुत हो गया। मेरे यहाँ पे बहुत लोगों के फ़ोन ख़राब हो गए जियो के, अभी भी चल रहा है, मतलब बड़ी बात है तुम्हारे पास जो है वो। She's the one who gets to make a ground-breaking machine that has the potential to reshape the entire market. That role should have been mine! तो खुद का बना लेना, चोरी क्यों कर रहा है? right. 'Cause it's definitely not embarrassing to have beef with a kid. That's enough! Give Crumclank back to us, right now! We'll see about that. ऐसा क्या है? मैं उतरा ना फाइट में, जिंदगी खराब हो जाएगी।
ऊपर गए हैं। This one's got Jordan. Why is this machine so powerful? I can't even hit the thing! No, you guys, don't attack him. We just have to wait it out. I'm not letting Crumbclank become a war machine. डैमेज होने नहीं वाला, बस हमें टाइम पास करना है। It's too late for regrets. Go Claw. Teamwork is dreamwork! Watch out. पंचिंग बैग के लिए सही है। कहाँ मार रहे हो? Bow your head. Picked the wrong test subject. पकड़। Okay, भाई. Rarely seeing damage numbers. Imagine hardware keyboard with the phone for typing. Barely seeing damage numbers. What's happening? I need an engineer over here. Quick, fix it. बड़ा इंजीनियर वाला आया. The core stopped working. It's supposed to concentrate Kuvaki, but it looks like it needs a specific transmission medium to operate. What kind of medium? Judging by the smell, I'd say some kind of dessert? That's I know for you guys. I know equals to dessert और कुछ नहीं guys. What? Don't sound so surprised. Crumbclank is a dessert baking robot. But I always thought it would be too sad if he had to watch other people eat all the time without joining in. So when I designed Crumbclank, I gave him the ability to eat desserts too, not just bake them. I think I understand now. The consumption of a cake-like dessert is required to keep the core's Kuvaki concentration function operating. हाँ यार, filler episode ही बोल सकता है. Filler episode in Genshin, I know. हाँ बोल सकते हैं कि क्या कर सकते हैं अभी प्राइमोजेम्स मिल रहे हैं तो भाई इम्पोर्टेंट चीज है. If cake baking is the goal, that kind of system is sustainable. But to use it as a weapon, not even Nod-Krai's entire flour and sugar production would be enough to generate the required amount of power. And you're just noticing this now? Well then get rid of that stupid function! Make it run on something else! Boss, it's embedded into the system. I'm not skilled enough to change something like that. I didn't even notice it at first. See? Crumbclank isn't a war machine. Now give him back. This technology could have been revolutionary. It was supposed to be my big break. And now it's trapped in some useless kitchen bot, all because of your stupid childish idea. अरे वो ऑलरेडी चाइल्ड ही है तो चाइल्डिश ही आइडिया होगी ना. दिमाग है पर ज्यादा. Wanna know something? अरे हाँ बताओ ना. बताओ जो भी बताना है. No. The prototype stays with me. I just need to hold out until I can secure an investment. Someone, get back the prototype! तुम लोगों को क्या लगता है? Try me, जाने देंगे? you stupid. Enough! Whoa! What are you all doing here? Protecting the Krumkaki craft shop is a job for all who call it home. Activating annihilation mode. अरे फतेह हार्बिंजर. वैसे फतेह हार्बिंजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैवलर से. उनका तो काम है गॉड्स नहीं I mean वो सेलेस्टिया से प्रॉब्लम है ना उनको.
ट्रैवलर तो वैसे भी ट्रैप्ड है सेलेस्टियल पीपल्स की वजह से यहाँ पे। इसका तो कोई कारण नहीं था, वो घूमने आया था बस। अच्छा यार, वो और उसकी बहन। भाई पर मुझे एक चीज नहीं समझ आती, मतलब अगर ट्रैवलर इतना पावरफुल था और उसकी बहन के साथ तो वो और भी पावरफुल, मतलब डुअल दो बंदे जिनके पास मतलब लाइट एलिमेंट की पावर है और प्लस अबिस के भी पावर यूज कर सकते हैं, तो भाई मतलब क्या सीन क्या है भाई? उनको हराने वाला कौन था? इतना पावरफुल कौन था भाई कि उन दोनों को भाई ऑलमोस्ट मेमोरी वाइप कर दी उन दोनों की। मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हेलो गर्ट्स, वेलकम टू स्ट्रीम। Let him run for now. Nod-Krai doesn't have laws, but it does have rules. Once word starts to spread about what happened here, he'll get what's coming to him. बात तो सही है। हाँ, ट्रैवलर इन डिल्यूजन आई थिंक, पता नहीं डिल्यूजन बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, मतलब साला मतलब वो भूल गया उसकी पावर्स। उसके पास लाइट एलिमेंट की पावर है पर वो टोटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, मतलब वो फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा उसकी लाइट एलिमेंट की। अगर वो यूज कर पाया तो भाई पूरा टेवाइट उल्टा सुल्टा कर देगा, मतलब कुछ भी। बहुत पावर है उसमें, ट्रैवलर के पास बहुत पावर है पर वो उसको याद नहीं है यूज करना। हाँ वही लग रहा, मेमोरीज का किसी ने मेमोरी किसके साथ छेड़छाड़ किया उनके, कुछ याद ही नहीं है साले को उसके पास क्या पावर है, कितनी पावर है। बहुत पावर है साले के पास साले, और ऊपर से दोनों कितने ओल्ड है, बहुत ओल्ड है, मतलब टेवाइट से भी ओल्ड है आई थिंक। वो टेवाइट बना भी नहीं होगा तब से वो पैदा है, और अलग अलग क्या बोलते हैं डायमेंशंस घूम रहे हैं। Is everyone all right? Apparently Nod-Krai doesn't have a police force, so I contacted your friends for help. सही है मेलिजीन्स, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। इन्नेफा आ गई। Wow! Way to think ahead, Sadil. अरे मैं भी उनसे ओल्डर हूँ वैसे। IRL गेंशिन आया कब? गेंशिन आई थिंक 2017 में आया। दे बॉर्न 2020 नहीं 2020 में नहीं 2017 में कुछ आया आई थिंक, 2017-18 में आया आई थिंक गेंशिन रिलीज हुआ, और मैं भी उनसे ज़्यादा ओल्ड हूँ। Where do you think I hit today? Wait! What about Crunclank? अभी क्रम क्लैंक को लेके जाओ इधर से, कोर उसी में है ना। Miss Aino, during the altercation, my brethren and I retrieved the core from that construct. 2020 पे It आया। should go to its rightful owner. I अरे apologize for thinking otherwise before. पबजी नहीं, पबजी तो 2017 नहीं 2018 में है, मेरे को डेट प्रॉपरली याद है 23 मार्च 2018 को पबजी आया। फ्री फायर का तो पता नहीं कब आया, पर पबजी 23 मार्च 2018 को आया, रिलीज हुआ प्रॉपर। This technology needs safekeeping, and I think... No. I know that it's safest in your hands. Of course. And I know you're not the bad guys I thought you were, so enough with all the mushy stuff, alright? Mushy stuff. Let's go home, Inefa. Oh, and when we get back, I want dessert. I think my monthly quota deserves to be reset, don't you? हाँ अभी से ज़्यादा डिजर्ट खा और डायबिटीज़ हो जाएगा और क्या। चलो एटलीस्ट ये हो गया, और एक क्वेस्ट बाकी है इसका, ये होने के बाद प्रीमोजेम्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत। क्रम क्लैंक, ये देखो ये थर्ड तक कंप्लीट हो गया, अभी फोर्थ में सिर्फ, अरे फोर्थ में वैसे भी कुछ है नहीं। क्या है? द ट्रबल डेज हैव कम टू एन एंड एंड यू एंड पाइमन डिसाइड टू पे आई नो अनदर वेज। ओके मतलब ये लास्ट है आई थिंक, ज़्यादा कुछ हो रहेगा नहीं इसमें, थोड़ा बहुत ग्रीटिंग्स का या फिर पार्टिंग वे का कुछ होगा। ये अच्छा किया है, अभी क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उतने टाइम तक हो जाता है।
कुछ बहुत कुछ नया डाल दिया है गेम में, सही किया है। एंड गेम प्लेयर, आई एम प्लेइंग गेंशिन सिंस 2024 अगस्त 12। अरे मैंने जब गेंशिन आया था नहीं, पता नहीं आया कब था, आया मतलब 2020 को आया ऐसा लगता नहीं। रुको मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअल रिलीज डेट क्या है, क्योंकि मेरा अकाउंट थोड़ा ओल्ड है पर मैंने खेला नहीं, मतलब मेरा फ़ोन उतना हैंडल नहीं करता था उस समय, तो मैंने बस इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल कर दिया था, तो उस समय मैंने अकाउंट बना के छोड़ दिया था। एग्जैक्ट कब आया देखता हूँ, रुको 1 मिनट। I do love Spina di Rosula's logo. 2020 को ही It was आया था। designed by my mother. ओके Have you noticed how it's shaped like a heart? 2020 को आया तो आई थिंक मैंने 2021 में आई थिंक किया होगा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर दिया होगा, क्योंकि उस समय मेरे पास 3 GB का फ़ोन था, तो 3 GB के फ़ोन में तो ऑफकोर्स चलेगा नहीं गेंशिन। तब भी था वो 30 GB का ही था तब भी, और अभी भी 30 GB का ही है। अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 35-40 GB तक हो गया है। हाँ, 28 सितंबर 2020 को आया था, एग्जैक्टली सही है। 28 सितंबर 2020 को आया था और मैंने अकाउंट आई थिंक 21 में ही आई थिंक अनलॉक मतलब क्रिएट किया था, और मैं खेला नहीं उस समय क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा फ़ोन नहीं था। सितंबर 28 सितंबर 2020 को आया। ओके तुमने कब शुरू किया वो नहीं, ओके मुझे भी याद नहीं है वैसे मैंने कब शुरू किया था। बाद में जब मैंने अच्छा नया फ़ोन लिया तो उसमें इंस्टॉल करके खेल रहा हूँ, मतलब अभी जो खेल रहा हूँ वो फ़ोन, ये फ़ोन है मेरा IQ Neo 7। इसमें भी स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। अभी 128 GB का लिया था मैंने उस समय, 2 साल हो गए फ़ोन को लेके। Hey, Aneva! Oh, Yehoda! You're here too? Well, after all that hard work, I at least deserve a slice of cake for my efforts. Don't you think? सही है भाई, सही है। मैसेज रिट्रैक्टेड भाई, क्यों? मतलब मैंने तो पढ़ लिया, मतलब क्या था। सही है। मेरे पास पीसी भी अभी 2 साल हुए उसको आके। पीसी मतलब लैपटॉप लिया, वो भी i3 लिया था उस समय, क्योंकि मार्केट में जो अच्छे वाले थे वो ज़्यादा प्राइजी थे उस समय। 2023 को आई थिंक, हाँ 2023 को उस समय प्राइजी थे, तो उस समय सिर्फ i3 ले लिया। और अभी i3 में मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फ़ोन में खेल रहा हूँ, फ़ोन का स्क्रीन लैपटॉप पे शेयर कर रहा हूँ, और वो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ यूट्यूब पे। फ़ोन तो मेरे पास भी नहीं था लेकिन पीसी था। ओके हाँ मतलब लिखा गलत था, ठीक है सही है भाई। पीसी था और पीसी है आई थिंक अभी भी तुम्हारे पास। पीसी पे भाई खेलो भाई, पीसी अच्छा है तो भाई पीसी पे खेलो। There's cake? Yes. You two are here just in time. Aino wanted to thank you for your help, so now that Crumbclink is back safe and sound, she thought it would be nice for everyone to try out his baking. अरे भाई ये क्रम क्लैंक पिग की तरह लग रहा है, पिग फेस। अरे साउंड भी पिग का ही निकाल रहा है भाई सच में। Wow! क्या बनाया है? So this is what Crumbclank was supposed to look like. Yes. Luckily, the core was still intact, so all Aino had to do was make a new body. सही है भाई, मतलब पीसी अच्छा लग रहा है कि वैलोरेंट वगैरह अच्छे से चल रहा है, मतलब पीसी अच्छा होगा तुम्हारे पास। Woohoo! Is it ready? अरे खुद खा गया। अरे हम क्या खाएंगे फिर? Hey! He ate it! It's not unusual for a chef to take a few bites before serving a dish. No need to worry. Once he's had his fill, he can get started on the desserts for everyone else. It'll just be a moment. All right. Wait, speaking of desserts, where's Aino? सही है, वाह। उसने अपग्रेड किया तो ऑफ कोर्स वही ओनर हो गया ना।
भाई तुमने मतलब वो स्पेस वगैरह डाल के लिखा तो है, पर वो ऑफ कोर्स हेल्ड फॉर रिव्यू चला गया, रिव्यू के लिए चला गया मैसेज। डोंट वरी, वैसे आई डोंट गेट अफ्रेड है। सही है। अरे कोई ना, तुम अपना बिल्ड कर लेना भविष्य में। She thought of a new idea for a robot and shut herself in the workshop to get started. When inspiration strikes, she jumps into action. That's just who she is. Why does Aino like building robots so much? Retrieving historical records from databank. At first, I believe Aino was just shocked to find something that fascinated her more than desserts. And fortunately, her friends respected her passion, even if, aside from struggling to make ends meet, there was little time for much else. Then, one day, an acclaimed teacher discovered her and recognized her passion for what it truly was: genius. Just like her friends, she finally discovered what she wanted to do, and not only that, she excelled at it. And when genius and passion collide, there's not much that can get in the way. So, Aino left her childhood friends, established the Clink Clink Krumkake craft shop, and started making all kinds of robot companions. Okay guys, wait, I'll be back.
ओके गाइस, आई एम बैक एंड बीजीएमआई खेलता हूँ तो वेट टिश्यू पेपर्स बैक चिपका देता हूँ फ़ोन के। हाँ, क्यों गर्म होता है इसलिए। फ़ोन का टेम्परेचर कितना रहता रहता होगा गेंशिन खेलते टाइम। मेरा अभी फ़ोन का टेम्परेचर मतलब चेक तो नहीं किया मैंने, पर हम मोस्टली बहुत हाई रहता है, इतना तो बता सकता हूँ ऑफ कोर्स। मैं Perhaps कूलर it लगा all के comes खेलता हूँ। down to the natural instinct of a genius. The drive to see their imagination come to life. मैं तो अभी कूलर लगा के खेलता हूँ। उसकी वजह से थोड़ा एटलीस्ट अच्छा तो चलता है। अगर कूलर नहीं होता ना मेरे पास, भाई गेम कंटिन्यूस खेल ही नहीं सकता मैं गेंशिन। बहुत गर्म हो जाता है फ़ोन। Oh, so that's what draws her to robotics. Based on my own experience with Aino, I think there's more to it than that. Long before she took me in, she was already pushing her skills to the limit in an effort to give each robot a distinct personality, and she already treated them like companions. What I mean is, it's not something that started with me just because I have a unique background. I think, after walking the path of a genius for so long, she looked around and realized there was no one at her side. And it made her feel lonely. नहीं भाई, कूलर काम करता है अपना इसका स्पिन बोर्ड का। स्पिन बोर्ड का जो कूलर काम करता है भाई, एक मक्खन काम करता है। फ़ोन के पीछे पानी क्रिएट हो जाता है भाई, पानी। मतलब गेम खेलते वक्त तो नहीं होता, होता है गेम खेलते वक्त भी होता है। अगर एक्सटेंडेड यूज़ करता हूँ, मतलब 1 2 3 घंटा यूज़ करता हूँ ना कंटिन्यूस कूलर लगा के, वो भी L3 मोड पे। L1 L2 L3 मोड है, तो L3 मोड पे तो भाई मोबाइल के पीछे फुल वाटर क्रिएट हो जाता है, वाटर फुल मॉइस्चर। एक्चुअली काम करता है, सही काम करता है। अपना स्पिन बोर्ड का है कुछ 1500 का है, मस्त है। So me, Crumbclink, and all the other robots Aino has added to the workshop, we're not just proof of her genius. We're her family. We give her the companionship she longs for. हाँ भाई, वो भी sही है, एसी वेंट के सामने रखना भी सही है भाई। As I see it, that's the true relationship between Aino and her robots. Oh, wow. So, you really mean a lot to her. Yes, and for that reason, it did not matter to Aino how powerful Crumbclink could become, nor how feared or coveted his technology might be among the fact, and she decided that he would join his family, and that meant she would spare no effort to save him. Yeah, that makes sense. But it makes Paimon wonder why someone like Aino would choose to stay in Nod-Krai. I'm afraid my logic unit cannot make sense of that question. Well, the way Paimon sees it, Nod-Krai is a dog-eat-dog place full of scheming and scamming. The people that thrive here seem to be built for that kind of thing. Anyone else would use the kind of tech Aino has to make weapons and threaten people. But Aino, she takes something that could be a weapon and turns it into a robot that makes cakes. It just doesn't seem like she fits in. बात तो सही है, मतलब शातिर दिमाग होने के बाद भी मतलब गुड डीड्स करना, मतलब चाइल्डिश। मतलब दिमाग तो बहुत तेज है बाकी चीज़ों में, पर थिंकिंग चाइल्डिश ही है। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, अरे हाँ वो भी बेस्ट है एक्चुअली, मस्त है, वो भी मस्त हो जाएगा। तो यूज टू थिंक वाई, मतलब वो बेस्ट नहीं है क्या अभी? तो मुझे लग रहा है कि वो अच्छा रहेगा, मतलब उससे मतलब कंटिन्यूस, मतलब क्या बोलते हैं, आइस कोल्ड वाटर भाई घूमते रहेगा ना उसमें। अरे भाई हमने गरीबी देखी है ऑफ कोर्स। No, my view is the exact opposite. I've encountered the full spectrum of people that live here in Nod-Krai. But in my experience, very few of them can be said to represent this place. You say Aino doesn't fit in here, but I believe the opposite. If I were to attempt to define what a person from Nod-Krai should be, no one is a better match than Aino. Ooh, the dessert should be done! Yes, one moment. Allow me to serve them. I want the one with the most frosting!
All right, everyone. अरे फर्स्ट टाइम खाते हुए दिखाया, नॉर्मली दिखाते नहीं है। So worth it. फर्स्ट टाइम पैमन के हाथ में खाना देखा मैंने, मतलब हाथ में पकड़ा हुआ। बॉइल्ड एग खाने जाता हूँ तो 2 से ज़्यादा नहीं खा पाता। अरे भाई बॉइल्ड एग तो मेरे से भी नहीं खाया जाता, मतलब वो क्या पता भाई, मेरा दोस्त है वो बोलता है भाई, वो मतलब जिम जिम करता है ना, तो वो बोलता है कि भाई 6-7 नहीं 12 अंडे ऐसे ही खा लेता है वो। मतलब कैसे? मैं बॉइल्ड एग मतलब 2 भी खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई ब्लोटिंग, मतलब पेट भर गया भाई बस। अरे 20 रुपये का अंडा भाई, मजाक है क्या? हमारे यहाँ पे 7 रुपये का एक अंडा है। अभी तो 7 हो गया है, कुछ महीने पहले 6 था, उसके कुछ महीने पहले 5 था। महीने पहले नहीं, साल पहले, 1 या 2 साल पहले 5 रुपये का था, अभी 7 रुपये हो गए, 7 रुपीज़। फाइनली भाई ख़त्म हो गया, बोर हो गया था भाई, कुछ और खेलना था। चलो थोड़ा मारा पीटी करते हैं। मिशन कंप्लीट। यहाँ पे जाके ये उठाओ, उसके बाद आइनो का कुछ और भी बचा है वैसे रीजन। अरे ये सब तो करना है ना भाई, ये वेपन तो चाहिए हमें। ओके, क्वेस्ट कंप्लीट हो गए सारे, बचा है तो अभी असाइनमेंट्स बचे हैं। क्वेस्ट ये सब बचा है, ये सब करना। भाई प्रामोजेम्स कहाँ है? प्रामोजेम्स नहीं दिख रहे यहाँ पे। प्रीमोजेम्स, आई से प्रीमोजेम्स नॉट प्रामोजेम्स। मैं एटलीस्ट 5 खाता था, लेकिन अब गरीबी आ गई। अरे भाई बीस के 2 एग। अरे 20 के 2 एग, अरे इतना महंगा है? 10 रुपए का एक एग है वहाँ पे, हमारे यहाँ पे 7 रुपए का है, मतलब फिर भी। अरे एक काम करो, इतना महंगा है तो क्या करो भाई, थोड़े पैसे जमा करो और पोल्ट्री शुरू कर दो भाई, पोल्ट्री फार्म। भाई तुम सिर्फ 10 मुर्गियों को पालो, 10 मुर्गियाँ 10 अंडे देंगे, 10 अंडे बेच दो भाई, पैसा ही पैसा। मैं महाराष्ट्र से हूँ भाई, तुम कहाँ से हो वैसे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई तो पता ही होगा, मुंबई किसको नहीं पता। यूपी लखनऊ, ओके ओके ओके, यूपी से। उत्तर प्रदेश। Perfect weather for a nap in the workshop. अभी यहाँ पे तो कुछ बातें होने नहीं वाली, बस भगाते रहो, क्वेस्ट कंप्लीट करना है बस। ये सब पढ़ने लगूंगा तो भाई 10 साल हो जाएंगे क्वेस्ट कंप्लीट करते करते। अरे हो गया इतनी जल्दी? इतने छोटे छोटे है क्या? दिल्ली में रहता था लेकिन लखनऊ आ गया। दिल्ली इज नॉट फॉर मी। अरे भाई मुंबई इज नॉट फॉर मी ब्रो। मैं मुंबई मतलब मुंबई के एग्जैक्ट मुंबई में नहीं रहता, मुंबई से थोड़ा दूर रहता हूँ, मतलब एक 200-300 किलोमीटर दूर मुंबई से। भाई मुंबई मेरे को भी नहीं जमती, मतलब भाई क्या वो इतना गंदगी ये वो, मतलब भाई रश, फुल रश लाइफ नहीं भाई, पसंद नहीं है। मैं तो अभी मतलब थोड़ा विलेज एरिया में रहता हूँ, गांव टाइप एरिया में, तो इस वजह से पला बड़ा भी वहीं पे हूँ, तो इस वजह से मेरे को सिटी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, मोस्टली हरियाली ज़्यादा पसंद है।
ज़्यादा फ्रीडम लगता है हरियाली में। फैसिलिटी होती है रिमोट एरिया में, मेरा भी है इस टाइम पे। तो क्या लगता है, क्राउड, तुम्हें ज़्यादा क्राउडेड रहना पसंद है या ऐसे सॉलिट्यूड में मस्त मज़े करो ग्रीनरी में? क्या पसंद है अभी के हिसाब से? कलेक्ट नहीं करना है, बाद में करूंगा। अभी कुछ भी नहीं कलेक्ट करूंगा, एक्सप्लोरेशन अलग से करूंगा। नॉट क्राउडेड प्लेसेस, एग्जैक्टली ब्रो, यू आर लाइक मी ब्रो, यू आर लाइक एग्जैक्टली द सेम लाइक मी ब्रो। मुझे भी नहीं पसंद। Yes, and even if you managed it, the lunar semblance within would still... Dig it out. You could, but moving the mirror would still pose a challenge, even for you. Huh? You really can summon every ibis on the island if that's what it takes? And you, on the other hand, think this plan is a joke, even if the ibis gets its entire family involved? Kicking off over here. Looks like we've got a weasel thief and a heated argument with a bird. Flying joint east. Are they arguing over how to split the loot? We're plotting and scheming, to be precise. I'm told we have to get all our ducks in a row before moving forward on this job. But my co-conspirators disagree quite strongly on the best approach. And they're not exactly being diplomatic about it. Choice words have been spoken. All right, I believe you. I'm sure you do have friends in high places. Although, where did you learn to speak like that? From a short girl with a metal arm and a hat. Oh, of course you can keep talking like that so long as you enjoy it. But be sensible around her, okay? Don't copy everything she does. I'm going to have a little chat with the Traveler and Paimon now, so be good and pipe down a little. Huh, it really did quiet down. Being able to understand animal speak is so cool. Paimon wishes she had that ability. अरे भाई, मतलब ओल्ड इज गोल्ड ब्रो। माय पीसी स्टिल हैज डीवीडी ड्राइव। मेरे कॉलेज के भी मेरे कॉलेज के जितने भी पीसी है उनको भी है। नहीं, माइकॉन है। मेरे कॉलेज के जितने भी पीसी है उनको भी डीवीडी ड्राइवर है अभी भी। हाँ, कुछ 5 पीसीज नए लाए हैं, उनको नहीं है। उनको छोड़ के बाकी सारे पीसीज को है, अभी भी डीवीडी ड्राइवर है। Trust me, Paimon, you would not enjoy it very much at all. That sounded ominous. I just run down my spine. Don't misunderstand. Nothing terrible would happen, and it doesn't drive you insane or anything like that. Although, that being said, I do sometimes find it quite overwhelming. I was overjoyed when I first discovered that I could understand animal speech, but I quickly realized that it came with a downside. This ability is always active, and I cannot control it. सबसे बेकार चीज। Oh. Yeah, that would be a problem. And if you can't control it, that means... Exactly.
People say that listening to the bird song deep in the woods gives them a profound sense of peace and quiet that lifts their spirits. But no matter where I go, I can never find peace and quiet. When I stand in the forest, I hear the chatter of the wildcats, the rabbits, the rhyme-horned deer, the chic badgers, and the long-plume ibis. They argue loudly about who's to blame for damaging whose roost, or which part of the woods the best twigs come from. Exactly, भाई इतना noise भाई जिंदगी भर सुनते रहना पड़ेगा. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. भाई नींद नहीं आएगी रात को और कुछ नहीं. Alright. Guess talking to animals isn't all it's cracked up to be. ऑन ऑफ करने का बटन रहता तो सही रहता. Waking up to the sound of birds chirping is pretty nice, but replace that chirping with bickering, and suddenly it doesn't seem so appealing. As for me, I've lived with it so long that I'm used to it now. In fact, it would probably be quite an adjustment if I woke up one day and couldn't hear the finches discussing which cup in Which cup? What? Yes. गलती से click हो गया. As for me, I've lived with it so long that I'm used to it now. In fact, it would probably be quite an adjustment if I woke up one day and couldn't hear the finches discussing which cup in which house makes for the best bath. Yes, plotting and scheming. Thank you for reminding me. I got a little sidetracked. Although, now that the traveler's here, we might just have the solution to our problem. मेरा फेवरेट गेंशिन में तो एक्सप्लोर करना है. मतलब एक्सप्लोरेशन पसंद है. गेंशिन इसीलिए तो मैंने स्टार्ट किया था. मुझे ओपन वर्ल्ड गेम्स पसंद है. मतलब ज़्यादा मतलब इधर उधर घूमो, नए चीज़ें देखो. आई लाइक माइनिंग. हाँ, माइनिंग भी पसंद है मुझे, पर गेंशिन में उतना नहीं. गेंशिन में माइनिंग मतलब भाई थोड़ा बोरिंग लगता है, क्योंकि साला कितना घूमना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है माइनिंग के भाई. और एक बॉस को 1000 बार मारो भाई, क्या भाई बोरिंग लगता है. एक ही बॉस को 1000 बार मारना बोरिंग लगता है. No, just you will suffice. This job involves breaking into a storage room by undoing the seal created with the moon mirror by a previous moon chanter. But for someone of your talents, I'm sure it will be a simple task. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Come, let's go. सही है ब्रो. पोर्टेबल वे पॉइंट मेरे पास भी है वैसे, पर मैं ज़्यादा यूज ही नहीं करता. Take a break after all that. देखो है मेरे पास कितने पड़े हैं, देखना पड़ेगा. आई थिंक हाँ देखो 18 पड़े हैं मेरे पास पोर्टेबल वे पॉइंट है. मैं भी तो इतना नहीं यूज़ करता. क्या मिला? अच्छा है ये. ये जो भी है मिला, जो भी मिला. जियो सीजन को मुझे रिडीम करना पड़ेगा मोरा के लिए. थोड़ा और ज़्यादा मोरा चाहिए. Around. Bring it. Okay. Frequently use करते Here हो. we are. What you see now is the moon mirror.
within which the lunar semblance is sealed. तो ये मतलब AR-60 होगा तुम्हारा, आई थिंक AR-60 है ना, ऑफ कोर्स मेरे को तो लग रहा है। अभी तुमने मे बी यू कैन अंडरस्टैंड, या मतलब समझ गया मैं। दोस्तों को अभी दिखाना है इधर उधर, मतलब कहाँ क्या मिलता है एग्जैक्टली, और ज्यादा कहाँ क्या मिलता है। Oh, must be a pretty precious statue if they went to all this effort to steal it away. Will there be some traps inside? You know, the kind that send arrows flying out if you step in the wrong place? Do not worry. This little one did some scouting for me ahead of time. मुझे The seal does बताना not तुम्हारा contain UID, any such fatal traps. UID बताना मुझे, मैं चेक करता हूँ तुम्हारा अकाउंट। मुझे मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज के रखता हूँ, खेलेंगे साथ में कभी कभार। Oh, nice. That's good to know. And yeah, that sounds like a job for a weasel thief. That's true. Each time I ask it for help, I have to pay it one more the next time we meet. Huh, what a thieving little weasel. Oh wait, that tracks. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल बता देना। मतलब तुमने लिख के नहीं रखा क्या, या फिर याद करके नहीं रखा? फोन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कल तो कल करेंगे। कल वैसे भी संडे है, फुल डे स्ट्रीम करूंगा गेंशिन का। But considering that it's helping you keep watch on the lunar semblance, it might need a name change. How about Weasel Guardian? Can't catch Paimon. Paimon can fly. बाप रे, चिढ़ा रही है। Come on, be nice to our guests. To retrieve the lunar semblance, we need to activate pairs of mechanisms in 2 different locations. So it's a 2-person job. If you head over there and take the mechanism on that side, I'll take this side. That won't be a problem. I have eyes in the sky. तो सही है। मुझे गेंशिन की याद नहीं है, पर मुझे मेरी बीजीएम नहीं, पबजी की जो पुरानी आईडी थी उसकी याद थी, बहुत ओल्ड थी। 51 30 52 17 37, हाँ ये मराठी में याद थी, वैसे हिंदी में बोलने जाऊंगा तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। It will keep me updated on where you are and which mechanism is in front of you. Don't worry. All you have to do is follow my instructions. भाई बैंक अकाउंट नंबर याद है मुझे। वो रहता है 16 डिजिट्स बड़ा, और वो मुझे एग्जैक्ट याद है। कैसे करना है? Understood. I will retrieve the lunar semblance now. उस पैन, अरे पैन भी मुझे याद है, मुझे पैन याद है, मेरा आधार कार्ड नंबर याद है, बैंक अकाउंट नंबर याद है, मेरे फैमिली के ऑलमोस्ट सारे के सारे नंबर याद है, फैमिली मेंबर्स के पास जितने भी नंबर्स है वो सब, मेरा खुद का भी तो ऑफ कोर्स याद है। और हाँ, मेरा डेबिट कार्ड का तो नहीं पता है, मुझे याद नहीं, मतलब याद वो नहीं याद रखा।
Understood. I will retrieve the lunar semblance now. Huh? Ah. The way out has been blocked. Could you try that again? ये क्या मामला करना क्या है यहाँ पे Understood. I will retrieve the lunar semblance now. ये भाई आवाज सही है अभी तो Huge statue! Yeah, no amount of birds or weasels is shifting that. वैसे तो अभी डेबिट कार्ड से तो पे नहीं करता अभी यूपीआई आ गया तो यूपीआई से पे करते हैं वो तो बहुत इजी है He probably couldn't even get past the mirror. So, Lauma, just how valuable is this statue anyway? In terms of Mora? Not much, I suspect. It's crudely fashioned, and the kind of stone it's carved from is found everywhere around these parts. But to the moon chanter of that era, and to the frost moon scions of today, it is a priceless treasure. If nothing else, I now have concrete proof of its existence. That's enough to confirm the reliability of several documents on the topic. To me, that makes this a very successful trip. Thank you for your help. I knew I had judged you correctly. The moon mirror posed no obstacle to you. And our little friend here was very impressed with your mechanism operating skills. What is it saying, Lauma? हाँ वेबसाइट्स पे नहीं होता था पहले अभी अभी शुरू हो गया ना सब कुछ अभी अपडेट हो गया अरे नहीं पहले नहीं था पहले यूपीआई नहीं था अभी कुछ साल पहले आया मतलब कुछ साल नहीं अभी 1 या 2 साल हुआ आई थिंक आके तब से यूपीआई शुरू हुआ उससे पहले नहीं था उससे पहले वेबसाइट पे हाँ ऑफ कोर्स नेट बैंकिंग एंड कार्ड से होता था पेमेंट आई थिंक ये दो ही ऑप्शन It थे says that the traveler is the best treasure hunter it's ever seen. It wishes it could join him on a quest to unlock all the treasure chests in the world. From now on, I'll call on you if I ever find a treasure chest I can't crack. Okay. Bye then. Didn't even give us a choice in the matter. Don't worry, it won't come knocking on your window every day with a Mora coin in its jaws trying to drag you off on a treasure hunt. And it certainly won't be visiting your room in the dead of night, moaning about locks it can't pick. Uh-oh. We better make sure to lock all our doors and windows before we go to sleep tonight. Relax. That weasel's only a child. It means no harm. It's just more talkative than most. All right, let's head back. It's almost time for dinner. Oh, and we still need to figure out how to get this statue back to our library. It seems like I'll need a little help from my friends, after all. Quest 1 पहले वाला तो जल्दी हो गया Just here will do. Oh. That all went down without much fanfare. Paimon was expecting something exciting to happen once we put it down. Well, it's just a plain old statue. A historical relic. It doesn't hold any kind of mystical power.
हाँ वो तो फ्रेंड्स को देना है तो हाँ यूपीआई कार्ड नहीं आता वहाँ पे। अगर उनका खुद का अकाउंट है तो भाई अकाउंट पे भेज सकते हो ना पैसे, वैसे तो कोई वो नहीं है सीन, कार्ड देने की जरूरत नहीं है तो उस टाइम पे। अभी तो नहीं, अभी तो बहुत इजी हो गया। The real value lies in the stories behind it. My job is to dig those stories up, wherever they might be hiding, verify them, and then share them with the people. Cool! Well, it's a good thing we got it back here in one piece. Indeed. And you two have my thanks for that. Please, take these fruits and quench your thirst. I had the animals gather them in the woods. And after that, forgive me, but I have another request to make of you. ओके सही है। I apologize if this is presumptuous of me, but I've seen how well connected you are, and I've heard of your many travels into secret and forgotten places. On your future travels, if you ever come across any texts about the Frost Moon Scions, could I borrow them and make a copy with which to enrich our library? You have my sincere gratitude on behalf of the Frost Moon Scions. तो फिलहाल तो नाविया है, क्योंकि मेरी सबसे फर्स्ट 5 स्टार है वो। तो फिलहाल तो वही है, फिलहाल मतलब वही है अभी, वही फेवरेट है। अल्वेडो सही है, अल्वेडो भाई बंदा सही है। रिसर्चर है, रिसर्चर कुछ ना कुछ नया बनाते रहता है, ढूंढते रहता है। सही बंदा, फंस गया था पिछली बार। Oh boy. That was some seriously tasty fruit. So much better than Paimon's used to. कुकर खा गई सारे के सारे, मुझे नहीं मिला। These animals have lived their whole lives in this forest. Naturally, they're the ones who know where to find the best fruit. हाँ, अल्वेडो की स्टोरी में कुछ ना कुछ तो रहता ही है, ऐसे कार्ड कार्ड जैसे हो जाता है ऐसे। This one says to eat as much as you wish, because it's the top fruit finder in the whole forest. It'll fetch some more right away. Awesome! Thanks so much! Join meeting point construction. हाँ बोलो बोलो।
मेरा वॉच आवर काउंट नहीं होता मतलब अभी तुम जो मेरी स्ट्रीम देख रहे हो तो वो वॉच एज अ वॉच और मेरे मतलब मेरा स्ट्रीम पे नहीं काउंट होगा। अरे नहीं, एड ब्लॉकर का कोई संबंध नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम एड ब्लॉकर से है नहीं क्योंकि मेरा अकाउंट अभी मोनेटाइज है ही नहीं, तो ऐड आएंगे ही नहीं मेरे स्ट्रीम पे। तो कोई संबंध नहीं है वैसे। और लगता नहीं कि ऐसा होगा कि वॉच टाइम काउंट नहीं होगे तुम्हारे। काउंट हो जाएंगे आई थिंक, देखते हैं अभी, कल पता चलेगा ना कितना वॉच और मिला मुझे इस स्ट्रीम से। अरे डजंट मैटर, मोड वाईटी यूजर होगे तो भी अभी तुम एक्सेस वीडियो, अगर तुम स्ट्रीम देख पा रहे हो मतलब कि तुम डाटा भेज रहे हो तुम्हारे फोन से, तुम्हारे फोन से डाटा भेज भी रहे हो और तुम्हारे फोन पे डाटा आ भी रहा है, तो इसका मतलब वो देख सकते हैं तुम्हारा फोन। ऐसा है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि तुम मोड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब Ah, how होगा many नहीं, forging हो commissions सकता है। अभी कल पता चल जाएगा, देखते हैं। do I still have to finish? Let's see. 1, 2. Not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. नहीं, मोनेटाइज नहीं है मेरा चैनल, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसलिए इस वजह से। अगर मोनेटाइज होता तो पता चल जाता, मतलब मोनेटाइज नहीं है तो भी पता चलेगा, मोनेटाइज होगा तो डायरेक्ट पता चलता कि वॉच टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। दोस्त ने बताया मुझे तो Gloomy skies overhead. Oh, just like the last time we were here. मोड The air's all मोड का तुम icky and sticky and dark and damp. अरे पाइवान थोड़ा शट अप। मोड का यूज तुम एड ब्लॉकर के लिए कर सकते हो, एड ब्लॉक करोगे तो अभी उसने जो बोला वो मे भी थोड़ा गलत है या फिर तुमने गलत सुना होगा। रेवेन्यू नहीं मिलेगा मुझे, हाँ अगर मेरा मोनेटाइज रहता और मुझे ऐड से पैसे मिलते हैं तो अगर तुम देखोगे और तुम्हारे यहाँ पे ऐड प्ले नहीं होगी तो तुम्हारी तरफ से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पर वॉच टाइम तो मिलेगा क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो मिलेगा। पैसे नहीं मिलेंगे मुझे अगर मैंने मतलब एड्स तो खुद लगाते हैं जो ये है, क्या बोलते हैं, जो यूट्यूबर है वो खुद एड्स लगाते हैं अपने वीडियोस पे, तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे यहाँ पे ऐड प्ले नहीं होगी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ पर वॉच टाइम काउंट होगा, वॉच टाइम होगा, तुमने देखा है तो तुम्हारा तुम्हारा एज अ व्यू भी काउंट होगा। ऐसा है, तुमने कमेंट किया है तो तुम्हारे कमेंट भी काउंट होंगे, ऐसा है होगा, इंटरेक्शंस होंगे पर पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि क्योंकि ऐड प्ले नहीं हुआ तो पैसे क्यों मिलेंगे, ऐसा है। इंटरेक्शंस होंगे, इंटरेक्शंस काउंट होंगे। Whew, we didn't get a good look then. All Paimon remembers is that really tall tower. So, let's explore the area more fully this time. Wait, is that... फ्लिंस क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई फ्लिंस कैरेक्टर मुझे बहुत सही लगा। Good day, you two. भाई उसका प्लेबल कैरेक्टर आने वाला है ना? I don't have the time wrong. मुझे मुझे चाहिए भाई, वो कैरेक्टर मुझे पसंद आया, मतलब नॉड-क्राई में ये बंदा पसंद आया मेरे को। It is always dark in the final night cemetery, so I simply made a guess, presuming that you'd prefer to act during the day. It seems I was mistaken. Phew! Well, it's good to see a familiar face. Especially in this darkness. Oof! It really gives you the heebie-jeebies! अरे वाह भाई सही है। 145 विशेस सेव्ड फॉर फ्लिंस। नाइस भाई नाइस, मुझे पसंद आया, मुझे कैरेक्टर ऐसे मतलब सच में कूल लगा भाई, कूल बंदा है, कूल एंड काम बंदा।
CRR1 मिल जाएगा। अरे भाई ऑफ कोर्स, आई विश यू द बेस्ट। मेरा लक तो बहुत घटिया है गेंशिन में। मतलब पबजी में मेरा जितना लक था ना भाई, उतना किसी भी गेम में नहीं था। मतलब अभी भी है, मतलब गेम में नहीं है, पर पबजी में जो था ना लक भाई, मतलब 5 क्रेट ओपन करूंगा उसमें से एक लेजेंडरी निकलेगा ही निकलेगा भाई। जितने भी क्रेट नए आते थे उसमें अगर मैंने क्रेट थोड़े बार जमा करके रखे हैं फ्री में, पैसा डाल के नहीं, मैंने पैसे कभी गेम में डाले नहीं, तो पैसे डाल के नहीं, फ्री में अगर जमा करके रखे और वो खोले तो मुझे उसमें लेजेंडरी या फिर मिथिक 100% मिलता। पर गेंशिन में मैं तुम्हें बता दूं, मुझे सिर्फ एक बार अर्ली पीटी लगा है, एक बार, सिर्फ एक बार अर्ली पीटी लगा, बाकी सारे लेट पीटी है। आई मीन हार्ड पीटी है, सारे के सारे हार्ड पीटी। मतलब क्या, 70 विश के ऊपर ही मुझे कैरेक्टर निकलता है, 50-50 हो या गारंटीड हो भाई। 70 विश से पहले निकलता ही नहीं मुझे। सिर्फ मेरी राइडन राइडन शोगुन जो है वही मिली थी 43 या 44 पीटी पे, पर बाकी सारे के सारे कैरेक्टर जितने भी 5 स्टार मिले वो सारे के सारे कैरेक्टर 70+ पीटी पे है भाई। बीजीएमआई धोखा देता है पर पबजी नहीं, पबजी धोखा नहीं देता था, पबजी सही था पहले। पबजी भाई, पबजी ग्रेट था। बीजीएमआई अभी बहुत टट्टी है भाई, बीजीएमआई एकदम टट्टी है भाई, उसमें कुछ भी नहीं मिलता मुझे तो भाई। छोड़ ही दो, मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी है बीजीएमआई में, तो गैम्बलिंग छोड़ ही दी है, और यहाँ पे भी छोड़ दी है। बताता हूँ कैसे, दिखाता हूँ रुको कैसे गैम्बलिंग छोड़ी है मैंने। You needn't worry. This is my humble abode and the tomb of the Lightkeepers. And while somewhat dark, it is on the whole a safe place. That being said, I rarely receive visitors here, save for the occasional colleague. What brings you two here? Well, to be honest, we just wanted to see where you live. We were in such a rush last time, we didn't get to do a proper tour. I see. In that case, as guardian of the tombs here in the Final Night Cemetery, allow me to extend the warmest of welcomes to you both, on behalf of the spirits who slumber here eternally. Wait, do you mean there really are ghosts here? यस पाइमोन, बहुत सारे घोस्ट है, तुम्हारे सर पे बैठेंगे, तुम्हें खा जाएंगे। That is correct. As you may have noticed, this island is dotted with headstones. You might think of it as a veritable necropolis filled with souls. Isn't it a welcoming thought? भाई नहीं भाई, मैं मतलब गेम में पैसे मैंने किए हैं, थोड़े बहुत ही किए हैं भाई अभी तक, ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे मतलब भाई माइंडलेस नहीं भाई डाला है पैसे। गेंशिन में तो बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इसमें गेंशिन में डाला है, मतलब ऑफर होगा तो डाला है मैंने ऑफर पे। मतलब क्या कि अभी 60 क्रिस्टल्स मैंने लिया था, बाई किया था 60, वो 99 रुपीज़ का मेरे पास ऑफर आया था कि 10 या मतलब 70 नहीं, कितना 90 रुपीज़ का, 90 या 80 रुपीज़ का मुझे ऑफर आया था कि उतना ऑफ मिलेगा। तो 100 रुपी वो 99 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा था, कुछ 5-10-20 रुपये में ख़रीदा था। तो वैसे ऐसा ही मतलब भाई। अरे भाई माइंडलेस मतलब वैसे नहीं, मतलब कहने का तरीका ऐसा नहीं था, मतलब भाई बस पैसे, मतलब कुछ अच्छा लगा तो उसमें उड़ा दो ऐसा। मतलब मेरे को अच्छा बहुत कुछ लगा है पर मैंने उड़ाया नहीं भाई। भाई सेल्फ कंट्रोल, पैसे है पर खर्च नहीं करने, क्योंकि भाई गेम है, गेम का क्या है, कुछ दिन तक खुशी देगी, उसके बाद गेम चला जाएगा, उसमें पैसे गए गए। बाकी कुछ परमानेंट जैसा कुछ खरीदना चाहिए यार लाइफ में, वहाँ पे वेस्ट करो। गेम में क्या वैसे भी गेम में कैरेक्टर्स तो मिलते ही रहते हैं, पैसे क्यों खर्च करना है, वैसे भी वो आते रहते हैं बार बार यहाँ वहाँ, वैसे भी 1 साल 1.5 साल कुछ दिन बाद वापस से रीरन तो होता है, होते ही रहता है, तो क्यों वेस्ट करना। Ah, apologies. It was meant merely as a gesture of the hospitality that you deserve as guests. We don't receive many visitors here after all. But I suppose it is a tall order to expect people to suppress their fear of ghosts. Even so, I do hope your visit shall be a pleasant one. क्या हुआ भाई, तबीयत वगैरह ठीक है ना? मतलब अभी जो बोल रहे हो उसके हिसाब से तो परमानेंट में तो फूड ही है, परमानेंट में तो फूड ही है।
फूड भी कहाँ परमानेंट है, पेट में The जाने के बाद spirits खत्म हो on this जाता isle, है। while somewhat old-fashioned and hardly gregarious, are an unassuming crowd who keep to themselves. I have found they make perfectly decent neighbors. If you still have misgivings, I can only suggest that you avoid staying outside where possible. The ghosts do not tend to set foot indoors very often. वो तो इंडोर में आते ही नहीं है, एकदम बहुत हार्डली आते हैं, घोस्ट आते हैं। Although that might render your sightseeing experience a little less riveting. Let me think. Most of the camps on this isle have been removed, and only the lighthouse remains, symbolizing the many battles the Lightkeepers have fought against the Wild Hunt. In that regard, it has quite a bit of historical value, and is thus well worth seeing. थोड़ा बहुत हेल्थ इशू भाई, बाकी कुछ भी हो जाए, हेल्थ सही रखो। दैट्स व्हाई आई प्ले गेम्स भाई, सबसे बेटर वही है भाई। कुछ हो ना हो भाई, गेम्स खेलो, मजे करो। Yeah, that was the first thing we saw when we arrived. So, it's a lighthouse, huh? What happened to the light? Years of disrepair and a shortage of fuel, I'm afraid. As this island became abandoned, maintaining the lighthouse became increasingly difficult. Besides, even if we were to rally sufficient manpower to repair it, it would serve little purpose these days. In the past, it guided people on their way to and from the island. But all those people now lie beneath our feet in eternal rest. Well, that is perhaps not entirely accurate. They do sometimes come running out, speaking once familiar utterances into the void. In which case, since you are not used to the darkness that shrouds this island, you could consider restoring the lighthouse to illuminate your way. I too know well the comfort that a distant ray of light can bring on those lone journeys through the cold night. Okay, question and answers. Well, it is an important testament to our history. But as is the case with many once magnificent buildings from the past, it now lies desolate and neglected. Not that the Lightkeepers have forgotten about it, of course. We are simply spread too thinly. अरे भाई, गेंशिन और घोस्ट ऑफ सुशिमा मैक्स सेटिंग्स में खेलना 4K एंड बेस्ट एफपीएस। अरे यार, वो तो मेरा भी है भाई। मेरा तो ड्रीम सेटअप का भाई यही है, मतलब मेरा एक खुद का रूम, उसमें मस्त बड़ा स्क्रीन, मस्त खतरनाक वाला सेटअप, मेरा पीसी, और उसमें मस्त बहुत सारे गेम्स। भाई मिडिल क्लास फैमिली में सपने तो बहुत है, पर पैसे तो नहीं है कुछ करने के लिए। But you will merely be lighting it up, not vandalizing it. Rest assured, you will face no objections. भाई लोअर क्लास और हायर क्लास में जो पिसता है वो मिडिल क्लास है भाई। आरजीबी मतलब है पसंद, पर लाइटिंग मेरे आंखों को थोड़ा चुभता है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे आंखों को, पर ज़्यादा भी थोड़ा पसंद नहीं है। नॉर्मल कलर्स या फिर वाइट कलर या फिर थोड़ा एम्बियंट कलर मुझे पसंद है, मतलब थोड़ा डार्किश में, मुझे ऐसे थोड़ा डार्किश में रहना ज़्यादा पसंद। हाँ हाँ, सोना आ जाता है ना, हाँ वैसे ही थोड़ा बहुत मुझे भी वैसा ही थोड़ा एम्बियंट कलर पसंद है।
As such, you should have no issues using it, so long as it helps you. फुल ब्लैक नहीं, एम्बियंट, थोड़ा मतलब थोड़ा मून जैसे जैसे फुल मून रहता है ना, वैसे फुल मून में जैसे दिखता है वैसे. I believe there should still be some backup fuel for the lighthouse stored in an old tent to the north. That should be enough to serve your present needs. And if you should need to find me, I will be in an underground basement on the north side. That's where I will be sorting through my reports. I will meet up with you once I have completed my urgent tasks. Okay, bye bye Flins. अरे भाई टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना बड़ा है क्या? Bring it! This place is super dark. Feels kind of stuffy too. Huh. And there are ghosts over there. Who will we? Either way, let's try not to get their attention. Let's just grab the fuel and go. Okay, हमें दिख रहा है भूत. The sky is so dark. I'm scared. They're staring at me. You sure took your time, didn't you? Come on, help me shift this fuel. It's almost time for our lighthouse shift. Does he mean... Look at you, shaking like a leaf. You scaredy cat. How you made the cut as a ratnik, I'll never know. Come on, grab your stuff and let's go. Perhaps I'll even tell you a ghost story on the way. What? A ghost telling us ghost stories? Wait, hang on. Was he just trying to scare us? You ever heard of the blue fire? As we all know, when you're out walking out at night, you should never look behind you, and never look all the way down at the ground. Always look ahead into the distant skies. Well, that's because the Wild Hunt watches us from the darkness. They wait for you to lose your way in the fog, and then, when you're at your most vulnerable, they come and take your life. That's why it's dangerous to travel alone in the dead of night. But sometimes, if you're lucky, you'll see a blue lantern shining out in the darkness. They say it only appears if you've run into the Wild Hunt or if you can't find your way at night. Either way, if you ever see the blue lantern appear, you must remember to follow it. Don't ask me what it is, because I don't know. My granddad says it's one of the Fae that used to live in Nod-Krai in ancient times. But it could equally be the ghost of one of our fallen warriors. One who truly hated the Wild Hunt. Whatever it is, the blue lantern seems to be on our side. The side of the Light Keepers. I'll bet that's why the Starshina wants to make offerings to it on the island. Ah, shucks, look at me talking away. I totally forgot I've still got fuel to move. मैंने सुना था कि Wait, but we brought all the fuel with us. What's this guy talking about? All right, I'd better get back. See you later, scaredy cat. It's nearly हाँ, मॉन्स्टर का अभी भी होना है बाकी ना, रिलीज वो भी बाकी है. और ये पूरा स्नेज नया मतलब पूरा बड़ा है ना, बहुत कितना बड़ा है? अब आई थिंक क्या बोलते हैं, स्नेज नया नहीं, आई मीन Nod-Krai. और वो ऊपर से जो कौन सा ये एरिया, मॉन्स्टर में जो एरिया है ना, जो बर्फ से ढका हुआ है, हाँ ड्रैगन स्पाइन भी तो मॉन्स्टर का ही है. उस पर कुछ कांड हुआ था ना, कांड मतलब
उस पे किसी ने मतलब शराब या फिर कुछ दिया, कुछ किया था, तो उसकी वजह से वहां पे बर्फ शुरू हो गया पड़ना। वो सब एरिया फ्रीज हो गया। हाँ हाँ, वही वही सेलेस्टियल नील की वजह से, हाँ वही 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 कुछ हुआ था। वही सेलेस्टियल लोगों ने ही कुछ किया था, इसकी वजह से वो ड्रैगन स्पाइन ऐसा हो गया। ओके, कहाँ पे चेयर? चेयर कहाँ पे? चेयर देखते हैं तो। ये वाला। ये वाला तो नहीं है, इस पे कुछ हुआ नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ आया था, क्या आया था? अच्छा, अरे वही चेयर है। टावर पे देखना है क्या? ओके रुको, टावर पे, टावर के पास। ये वाला। ये तो बेंच है, बस टावर को देखना सेट करने के बाद। अरे वही चेयर है, बस टावर को देखना सेट करने के बाद। क्या सेट करना था? सेट क्या करना था वैसे? उस चेयर पे बैठ के चेयर पे बैठ के ये करना था क्या? सेट करना है क्या? कुकिंग कर सकते हैं। सबसे बेटर ये चीज है ना, इसको कुक करने का सबसे बेटर चीज है। ओके बेटा, मतलब टावर की तरफ देखना है उस चेयर पे बैठ के। ओके, मैं कहाँ जाता हूँ उस चेयर पे? वो चेयर कहाँ पे? Off we go! Adventure time! कभी चेयर की तरफ देख तो रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक हटा दिया या फिर कुछ अलग होगा। अरे अभी लाइट अप नहीं हुआ है टावर। ओके, लाइट अप करना है क्या? ये पता नहीं था। अरे हाँ, लाइट अप करने के बाद। अरे हाँ, यहाँ पे टास्क वही है ना? टास्क तो वही है, मैंने भी नहीं पढ़ा। मैं पढ़ ही नहीं रहा। ये साइड क्वेस्ट में पढ़ता ही नहीं भाई, बोरिंग लगता है। Oh, finally, we're here. Let's find where the fuel goes and pour it in. Woohoo! The light's on! This should make things way easier. Now we can keep...
Great, the light's on. Guess I won't have to worry about moving fuel anymore. Hey! It's the ghost from before who was talking about moving fuel. What's he doing over here? The wild hunt came. It passed through all the graves. The fog clung to our ears, stuck to our mouths. We couldn't see or hear each other. What's he talking about? Has the wild hunt really showed up? Paimon didn't see it at all! To the lighthouse! To the lighthouse! We've got to get a signal to the units outside before they reach us. Don't just stand there gaping. Pull yourself together. Every second we hesitate could mean another dead comrade. Have you forgotten how to send signals? Come on! I've told you before, a lightkeeper always has to be prepared. We're all gonna die. They'll strip the bones from our spines. Something's off! All the ghosts are coming this way! Okay, complete कर लेता हूँ उसके We बाद शेयर too वाला. shall cry tears of blood. The wild hunt is here! We've got to think of something quick! Okay, we'll try and stall them at the base of the lighthouse while you head up to the top. Up to the top. Signal. Think something. If you've forgotten how to send signals, check the handbook. We nailed it to the tower for moments just like this. Do not fear. Do not fear. Don't leave our bodies to the wild hunt. I beg of you. That is no way to die. Death. Wild hunt. Go to the lighthouse. Oh, the ghosts have surrounded the tower. Should we do what they're asking? Sounds like they need us to head up, find the handbook, and use the lamp to send a signal out. Lighthouse. Hope. Everlasting night. Please remember the corresponding light signals and avoid sending incorrect ones. Distress, short, long, short, short, long, short. Okay. Guidance, short, long, short, short, short. Summoning, long, short, long, long, short, long. All safe. Short, long, short, long, short. Warning, the instruction is blurry and unreadable. Okay. The handbook says that we've got to aim the lamp in the right direction, then control the brightness according to the signaling rules. There are 5 signal types: distress, warning, guidance, summoning, and all safe. Huh. The part that describes the warning signal is illegible, so let's try one of the others. ना करो पे वाला सिग्नल देना. नहीं समझ नहीं आया क्या बोले, फिर से बोलना. My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Ugh, don't tell me I overdid it this time. Okay, the signal is sent. Let's go check on the ghosts. What happened here? Ran into a spot of bother? A whole host of ghosts surrounded the lighthouse. I sent them away to prevent them from blocking the area. And when they saw the lighthouse flashing, they departed. Oh, it was pretty scary. They completely surrounded us and begged us to help them.
I sensed it too. This graveyard is bereft of life save for passing birds, the insects underground, and myself. Normally, it's so quiet you can hear yourself breathing. Up until just now, that is, when these ghosts started getting agitated. Was it because of the lighthouse? They asked you to send a signal out. How peculiar. In my experience, they have never coerced or harmed anyone in any way. This can only mean that lighting the lighthouse has somehow caused a change in them. Flins कैसे use करेंगे? I must say, this is quite out of the ordinary. The ghosts here tend to stick to fixed areas and repeat words and phrases that meant something to them in life. But now, all eyes are on the lighthouse. They have a rather indistinct appearance, but when they fix their yearning strongly on a specific place, I can sense where their cold attention is directed. Consider it a natural talent of mine. As to the cause of this behavior, I do have a theory. Ghosts are the echoes of living souls, a portion of their thoughts and memories that, for certain reasons, fails to enter the ley lines at the moment of their death, and thus they linger on the surface. The ghosts in question were lightkeepers in life, and as such, I believe the lighthouse is deeply embedded in their memories. Something there, and relighting it must have stirred something in their memories, causing them to depart from their usual behavior. You might not be aware of this lighthouse's past, but it once served a great many functions. From guiding passing merchants and lightkeeper fleets, to reporting on the Wild Hunt's activity in the surrounding area. In the days before this was a graveyard, its light was never once extinguished. It came to symbolize the hope and warmth that the lightkeeper sought to bring to Nod-Krai. But alas, the light of this historic outpost was snuffed out in a conflict against the Wild Hunt several decades ago. According to our internal records, that conflict cost the island 90% of the troops stationed here. Wait, a warning signal? So... Indeed. The warning signal saved the nearby merchant fleets and patrolling lightkeeper ships. Without it, they likely would have been pulled into the fighting with little knowledge of the situation. But at the same time, this signal also cut the troops on the island off from any possibility of rescue. The Lightkeeper Oath contains a line that goes as such. Our bones and blood we shall use as fuel. We shall make life greater than death. It is a line that strikes at the very heart of our principles. Should we find ourselves at a great disadvantage, we are to prioritize the preservation of life and ensure humanity's long-term survival. After all, the Wild Hunt is a never-ending threat, while our numbers are limited. This principle is most cruel to those who must sacrifice themselves. And yet, most of us willingly abide by it. Shoot! So we sent out a distress signal, but what the ghost actually wanted was for us to send a warning signal, right? You feel you unwittingly did something wrong? No, I don't think so. Ghosts are but the memories of people that once were. You may have stirred up those memories, but that is all they are. Those to whom they once belonged are long gone. Still, I can see that you're concerned about them. And truthfully, so am I. If you wish to find them, just follow me. Ah, yes. And please do not be alarmed by anything strange we may encounter along the way. Okay.
अरे सही है, फ्लिंस को खेल सकते हैं। अरे वाह, Be silent. नाइन्टी लेवल 55 के 129 140 energy recharge weapons blood soaked ruins. That's right. Artifacts. These are the artifacts. Unable to give. Constellation C3. चला ट्रायल वाला कैरेक्टर हमें मिल जाता तो सही होता है यार। ये टैलेंट डेमो ऑप्शन क्या है, नया है? ओ ये बात है, ठीक है समझ गए। कॉन्स्टलेशंस पढ़ते हैं। The basic cooldown of the special elemental skill Northland Spear Song is used to force seconds. Party members triggers Luna charge reactions. Flins will trigger 8 elemental energy. This effect can occur once every 5 seconds. 5.5 seconds. सही है भाई। The next 6 seconds after using the special elemental skill Northland Spear Storm. When Flins next a normal attack hits an opponent, it will deal an additional 50% on of Flint's attack as AoE electro damage. This damage is considered lunar charge damage. Moonsink Ascendant Gleam. While Flint is on the field, after his electro attacks hit an opponent, that opponent's electro race will be decreased by 25% for 7 seconds. सही है, राइडन के लिए काम आ सकता है मेरे। Increase the level of ये चढ़ो। बर्थडे कब है इसका? 31/10 को। सही है। A modicum of patience for the richness and complexity of humanity. The wanton cruelty of the few is not worth our ire. Observe. ये करता क्या है? रुको देखते हैं। Flint summons forth the ancient power concealed in this lamp and switches to his manifest flame form. This form has the following characteristics. Flint's normal and charged attack deal electro damage that cannot be overridden by other elemental infusions. Like अगर मैं बेनेट C6 करा है मैंने और उसका बर्स्ट ऑन है, तो उस समय जब बाकी कैरेक्टर्स के अटैक्स एग्जैक्टली पायरो बेस्ड हो जाते हैं तो वो नहीं होगा, इलेक्ट्रो का ही रहेगा। Electro damage that cannot be overridden by other elemental infusions, and he is unable to perform plunging attacks. His interruption resistance is increased. His elemental skill, Ancient Rite, Arcane Light, is replaced with the special element skill Northland Spear Storm. Okay, थोड़ा बहुत समझ आ गया क्या हुआ, ज़्यादा नहीं। Be silent. Sure. Close your eyes. नाइस ब्रो, रीड करना अच्छी बात है। चीज़ें बेसिक चीज़ें रीड कर ली ना तो कैरेक्टर हैंडलिंग करना बहुत इजी हो जाता है। से बजे कितने हैं अभी? 1:29 हो गया है।
Had reinforcements arrived on the day of that battle, they would have landed here. You have to understand that ghosts are hard to reason with. A better way to communicate is to give them key information that might provoke some sort of a reaction. How about this? We'll go in together, but I'll handle the communication. After all, I'm not only a lightkeeper myself, but also very accustomed to dealing with ghosts. Don't come near us. Don't try to save us. Help is on the way. The wild hunt is coming in too fast. There's no time. Let us stay here and take them down with us. This place will be enough of a graveyard by the time the night is through. Don't send more people to their deaths. So you don't need rescuing? No, we do. Please save us. We can't hold on much longer. Of course, वो भी override नहीं होता. Yes, राइडन भी सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका ओवरराइड नहीं होता. एंड फिजिकल जोंगली, हाँ वो भी है. अरे भाई जोंगली है मेरे पास. Everyone else is gone, and we are lost. What more can we do? Please, someone, anyone, save us. Ignite the blue lantern. It will guide you far from the wild hunt. The blue lantern cannot bring back souls from the dead. Even if you light him up, it will be too late. He can help you destroy what remains of the wild hunt, but he cannot save you. Don't rescue us. Don't come any closer. No, wait. Help us, please. Someone, anyone. तुम्हें हेल्प चाहिए नहीं चाहिए? एक बार में एक ही चीज बताओ यार. What's this supposed to mean? Do they want help or don't they? पाइमॉन मेरी कॉपी करती है भाई. एग्जैक्ट. Those poor souls. On the one hand, they hoped that someone would send out a distress signal and save their lives. On the other, they did not wish to call in reinforcements only to send them to their deaths. And so they sought the help of the Blue Lantern spoken of in local legend. And indeed, one such lantern was still preserved on this island. That ought to have been their last hope in a time of desperate need. But to my great regret, it is of no use to them now. Will any other horrible things happen? They will recall the unfathomable suffering they experienced in their final moments. We shall part the snow curtain of the sky and blast the winter winds across the wasteland. We have sworn an oath, and so we must fight to the end. We cannot wait for them to come. We are the last ones. Pick up your weapons. We are the Light Keepers, who shine the eternal light of hope into the endless snow-swept plains. Wait, Flins! It seems like these ghosts have rallied. Again, they are but the replaying memories of once living people. Movie It is नहीं है not the मतलब? ghosts who have rallied, but the क्या Light scene है? Keepers who बताना मुझे. fought to the bitter end. Viewing the world through human eyes is like looking into a kaleidoscope. It is so complex and yet so beautiful. The sorrow and reluctance in the face of death. The longing for a life of peace and stability. The surprising valor that wells up in the hour of despair. If it were up to you, traveler, would you wish to do something for them? Is that so?
A response befitting an adventurer of your caliber. Personally, I do feel inclined to do something for them. To help these shadows of the heroes that once were forget the death that will soon be upon them, and return to their slumber. In time, the mess and yearning of these ghosts will fade, and slowly return to the ley lines. But that time has not yet come. My dear Ratniki, I am Kirill Chudamirovich Flins. Once upon a time, it was I who retrieved the fallen bodies from the battlefield. बाकी देखे Now, थोड़े बहुत सुपरनेचुरल नहीं देखा यार. Let me once more lay you to rest, for you are worthy of my respect and earnest esteem. Look upon my flame and wander no longer. Return to your graves and forever rest in peace. 6 feet under may you slumber in your erstwhile homeland, and in sweet dreams return to the ley line's embrace. Some of their memories and thoughts have been dispersed. The rest will later return to their usual state.
ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಒಳಗೆ ಕಣ ಇಟ್ಟಿದೆ ಬಾಣ ಮುತ್ತಂತೀನಿ ಬಾಣ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅದೇ ಆವಾಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇದು